Hello, hello. Hmm. Hello. I hope I'm audible. Hello. I hope I'm audible. So, hello everyone. I welcome you all to MoneyMind after a very long time. So, today we are going to use ChatGPT to identify some of the stocks which are good to buy at this current state of market where the market trend is on a डाउन ट्रेंड मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो इस वक्त ऐसे कुछ स्टॉक्स जो बहुत ही अच्छे हैं फंडामेंटली एंड उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए विल यूज चैट जीपीटी एंड देन विल डू टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू पे टू आइडेंटिफाई कि किस तरीके से एक अच्छा प्राइस हमें मिल सकता है जहाँ पे हम उन स्टॉक्स को बाय कर सकें. So we'll quickly get on with chat gpt. So as you all know, ChatGPT एक बहुत ही अच्छा tool है. You can utilize it to identify stocks which are technically and fundamentally really good, maybe blue chip stocks. So you just give it a prompt, act as an expert, fundamental and technical analyst to identify best blue chip stocks in each sector of Indian market. Okay, let's see. So it says identifying the top blue chip stocks across various sectors in the Indian market involves analyzing companies with strong financials, consistent performance, market leadership. So financial services sector में HDFC, ICICI, SBI, IT में TCS, Infosys, HCL, कंज्यूमर गुड्स में इट हैज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एशियन पेंट्स, एनर्जी सेक्टर में रिलायंस, ओएनजीसी, एनटीपीसी, automobiles we also have pharmaceuticals, infra, telecommunications, metals and mining and chemicals. So different sectors के fundamentally and technically really good जो stocks हैं, so those have been identified here by ChatGPT. तो सभी में जो top most है, let's try to analyze all these stocks, the topmost ones. So let us say financial services में we have HDFC Bank. So just go to trading view, वहाँ पे we'll type out HDFC Bank. So I've already done some analysis, तो मैं आपके लिए I'll just remove these already predefined analysis ताकि हम एक clear view के साथ we can go ahead. Okay, so what we'll do is, so this is your basic chart of HDFC Bank. Let us say daily time frame पे it's the chart. इसको we'll change it to monthly. So there is always have to be a uh, approach कि आप पहले monthly analysis करें, उसके बाद weekly analysis followed by daily analysis. Time frame
based on the time frame. So ये आपको एक overall view provide करेगा of the stock if it is trending or not. So before starting, we'll use few things, few technical indicators to do a quick analysis. It will help us out in the analysis process. So first we'll add. So first we'll add a moving average. No need multiple moving averages के लिए. You can simply use simple moving average, SMA, simple. We will also use RSI, so relative strength index we'll use. RSI, maybe we'll do some settings, which is fine. Yeah, we'll keep it 60 and 40. Middle one will remove. Regular bullish moving average, ये सब will remove. सिंपल रखेंगे 60 and 40 RSI. So above 60 it's bullish momentum, so buying के लिए बहुत ही अच्छा opportunity. Below 40 it's bearish momentum, selling के लिए बहुत अच्छी opportunity. 60 and 40 sideways market consolidation. Second, हम simple moving average को will change it to 200. Okay, so and then we already have volume as well parked below. So volume is definitely one of the most important indicators, because आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर ट्रेंड चल रहा है उसमें वॉल्यूम है नहीं है. What we are buying doesn't matter. What matters is कि जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs and DIIs, are they buying or not, or are they selling or not? So big volumes उन्हीं की तरफ से आएंगे. So our analysis supported by such large volumes is definitely a good sign and appropriate for any technical analysis to take place. So HDFC Bank is a blue chip stock in the financial sector, banking sector. So fundamentally it's really good. So what we have to do is do a technical analysis based on the indicators to identify best possible scenario where we can buy the stock at the best possible price. So definitely there are few things which I can quickly identify. So if we see this line was acting, this was the resistance, previous resistance, this was a resistance for past 3 years, that broke, but a dark cloud cover sort of candlestick pattern has formed और वो break करके वापस नीचे आ गया. So that is fine, things like that happen, market काफी volatile है, so need not worry. एक अच्छे प्राइस पर हमें मिल सकता है. So यहाँ पे what we'll do is एक zone mark कर लेंगे. We'll mark a zone, this zone, this is a resistance zone. 60-40 के बीच में है, मंथली टाइम फ्रेम पे इट्स अ साइडवेज मार्केट, so sideways stock basically. So we'll go to weekly time frame. Weekly पे भी again between 60 and 40 it's sideways. So what's interesting is one of the things, if you just see RSI, so RSI usually is not below 40 on a weekly time frame, but whenever it is, it's a good buying opportunity, as you can see all here.
सो वेन एवर इट इज़ बिलो 40 इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे कोविड के टाइम पे क्रैश हुआ था अगेन। यूजुअली फॉर मार्केट्स, चाहे निफ्टी हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, अगर वो वीकली टाइम फ्रेम पे दे आर ट्रेडिंग बिलो 40, either they are touching 40 or they are below 40, that usually happens due to some event which is taking place globally, और वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक और इन द ETF ऑफ निफ्टी में भी एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। सो अगेन जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना भी पीछे चले जाएं, 40 को टच कर करके वापस ऊपर बाउंस बैक कर जाता है, ज़्यादा टाइम तक 40 के नीचे रहता नहीं है। इफ यू जस्ट सी, सो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स की एक खासियत होती है कि दे वोंट ट्रेड much below 40 for a longer period of time. They will touch 40 or slightly go below 40 due to some event and then start moving upward, giving a new rally. So ये भी एक पॉइंट हो सकता है whenever you are trying to buy a stock कि वो 40 के पास में कब आ रहा है। फंडामेंटली गुड स्टॉक्स के लिए करेंगे तो इट्स मच बेटर। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, इट्स नॉट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर से, फ्रॉम अ स्ट्रिक्टली investing point of view. So again, it's not close by to that much 40, but it's still closer. We'll see. So यहाँ पे what we'll do is, so this was a clear uh, uptrend. So what we'll do is monthly में we will see. So यहाँ पे we'll do a Fibonacci retracement as well. So यहाँ पे there are few things which I have done in this Fibonacci indicator also, Fibonacci retracement indicator. So if you go to स्टाइल में जाके यहाँ पे बहुत सारे आपको रेशोज मिलते हैं। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज बेसिकली एक अपवर्ड ट्रेंड में अगर रिट्रेसमेंट आता है ऑन द डाउनवर्ड साइड तो मैक्सिमम कहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है। एक डाउनवर्ड ट्रेंड में एक अपवर्ड रिवर्सल मिलता है अगर हमें, तो वो रिवर्सल कहाँ तक मिल सकता है। To identify those things, we use Fibonacci retracement tool. It's a technical tool, technical indicator. यहाँ पे the main thing is there is a golden zone between 0.618 to 0.5. Rest below it you can ignore. There is no need to observe these. So between 50 and 61.8, it's a golden zone. It usually acts as a support if there is a downtrend and then एक upward trend के बाद एक downtrend है, तो वो zone एक support की तरह काम कर सकता है। वाइस वर्सा डाउनवर्ड ट्रेंड में एक अपवर्ड मूवमेंट आता है तो दैट जोन कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो हियर यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ नाइस बाउंस बैक जो हमें डॉट टू डॉट 50% के लेवल से देखने को मिला है इन HDFC बैंक। सो विल मार्क दिस जोन आउट। So we have marked this zone out. Rest are delete. This is a good green zone. Monthly time frame पे है। So we'll go to weekly. See weekly maybe it's a good bounce back. I think एक earnings भी आई हुई हैं अभी recently. But इस week में it's a good bounce back from HDFC Bank. Now we are on the daily time frame again, and in daily time frame also it's below 40. So it's in a downward trajectory, but again यहाँ पे there is a double bottom formation. 200 moving average के पास में आ चुका है। I think weekly में okay, so weekly में also it's the 200 moving average is slightly closer to the golden zone. That also usually happens. गोल्डन जोन के पास में ही वीकली 200 मूविंग एवरेज भी रहता है। सो वो भी एक इंडिकेटर हो जाता है, जो भी 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यूज करना चाहते हैं तो दैट वो कोइंसाइड कर जाता है बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के पास में डबल बॉटम फॉर्मेशन, गुड रिकवरी, एंड
On the same, so there is a RSI divergence also. So same price, two bottoms, and there is a RSI divergence, if you can see. So here, so one of the RSI, we see the value of RSI here. Here you can see the value. So it's 23.6 here, and at the same value it's 33.5. So it shows that there is an increasing RSI momentum, uh, leading to probably a trend reversal, जो downward एक monthly में हमें देखने को मिल रहा था, could now reverse. So again, this zone of 1624 to 1564 is a good zone to buy HDFC Bank. Slightly thoda upar hai. It's still fine to buy HDFC Bank. Again, it's not a recommendation, but just based on the technical analysis. And fundamentally, HDFC Bank is really good. Technically, it's nearby the zone. Next, we'll see IT sector say TCS. So we'll follow the same protocol. TCS we'll go to monthly. So I already do a lot of analysis technically and all. So यहाँ पे पुराना एक technical analysis I had done previously 2-3 years back. So all these are from that analysis only. So just ignore these. Again, RSI is between 60 and 40. It's a consolidation zone. Here, if you can see, I have already marked the Fibonacci retracement zone here. Yes, from this upward to downward trend, if you can see, इस जोन के बाहर गया ही नहीं है वो अभी तक. TCS इस जोन के बाहर गया ही नहीं है TCS. That shows the power of this golden zone. इस जोन के बाहर नहीं गया, यहीं से इसने बाउंस बैक किया, it started moving up. Now we'll go to weekly time frame. Again, it's above 200 moving average, so that's great. वीकली भी 60-40 के बीच में है. यहाँ पर भी if you see scroll down करके 40 के नीचे जब भी जाता है, tries to bounce back. That acts as a good buying area to invest in any of the stocks. Again, यहाँ पे भी COVID time, good crash, good correction I would say. 40 के नीचे गया, good opportunity to buy. 200 moving average से coincide कर रहा है, so it's good. So again, you can see 40 के नीचे ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं. अब यहाँ पे there is another interesting thing which is taking place if we see. So there is a trend line का support. At the same time, there is another trend line का rejection which is taking place here. So in between, it is there. ऊपर जाके वापस resistance लेके it can come down, take support, and eventually it will break out or break down in any which direction. Again, it's at a good opportunity to invest in this stock, particular stock. 3973 to 4095 in between. It's a good opportunity to buy. It's a low risk opportunity to invest. अगर इस zone के नीचे break करके जाता है, you can exit your investments. It's a very low risk investment. See, any kind of an investment always entails some kind of a risk. बिना risk के कोई भी investment नहीं होने वाला है. So it's a minimum available risk. यहाँ से downward trend आने के बाद if it goes towards 200 moving average, वहाँ पे if there is some candle bullish candle formation, good volume, again वहाँ पर जाके भी you can buy. Fundamentally, TCS is a really good stock. There is no doubt about that. So it's just the technical analysis being done to identify the good buying price. Again, daily time frame, if you see triple top, one two three triple bottoms, actually 1 2 3 bottoms of formation near RSI 40.
it's taking some support. Last के जो दो double bottoms बने, there is RSI divergence as well. So you can now take some stocks, do some investment, but again, it can very well go down below it. So you can keep your stop loss below this 3973 3900 on a closing basis, maybe weekly closing basis, daily closing basis. I would suggest weekly closing basis because you're doing an investment in a particular business for a longer period of time, until and unless there is some really a bad thing which is happening in the stock, there is no requirement to exit your investments and all. Again, that all depends on your risk appetite. Consumer goods may we have HUL, so let us analyze HUL. Again, so again I had done previously analysis and all, तो उसी का है. So there was a, interestingly, there was a support trend line from 2016. It tested in 2022. It broke down, again bounced back, but it has again broken down yet again another time. But at the same time, if you see monthly RSI, it's not below 40. It's nearby 40. Interestingly, it has gone below 40, maybe 2004 and then this 2003 at this point of time. Right? These are actually good. This is a good indication that it's a good time to buy this stock. Again, since यहाँ पे we are seeing, wait, I'll just try to remove. Yeah. So it's a support trend line. So यहाँ से breakdown होने के बाद भी, if you see, there is not much of a big volume. If you see, these volumes are not big enough. Just normalized volumes. Usually इतने volumes तो trade होते ही नहीं HUL में. ऐसा कोई बहुत बड़ा volume नहीं है. Let us say ये volume, this is a big volume. So it indicated maybe an offloading of good number of stocks by someone from FIAs or DIAs or individual investor who has offloaded his shares or maybe bought some shares. It could be anything. इतना बड़ा volume नहीं है यहाँ पे. In fact, the green volumes were much larger than the red ones. So it shows that there is nothing wrong with the stock. It's just the market ka scenario, however negative it is, whatever downtrend that we are currently seeing. So it's way above the 200 moving average. Weekly में will go, it's below 200 moving average. So इसमें investment करने के लिए you can wait for some time. If we just see the Fibonacci zone as well, we'll just see the Fibonacci zone as well. So here it was. So if you see, this was the zone. Now interestingly, इसी जोन में वो वाला जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन था, वो भी यहीं पर ही फॉल हो रहा था, जो काफी टाइम से फॉलो हो रहा था, वो इंटरेस्टिंगली वहीं पर ही फॉल हो रहा था. अगेन एज आई सेड, 200 मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम, वो भी उसी जोन के पास में ही था. वहां से इट हैज ब्रोकन डाउन. वीकली टाइम फ्रेम पे वी कैन सी के रेड वॉल्यूम्स, रेड जो वॉल्यूम्स हैं, दोज आर मच हायर and consistent enough as compared to the green ones. Consistently red candles ज़्यादा दिख रहे हैं, उनके volumes भी अच्छे खासे दिख रहे हैं as compared to the green ones. So it shows there is a downtrend which is taking place. It has broken below the 200 moving average. It has gone down below the golden zone as well. Yes, it is near the uh, RSI is 40 on weekly time frame. That's good, but there is no requirement, not a hurry to buy or invest in Hindustan Unilever at this point of time. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम कब कर सकते हैं, जब यहाँ पर
maybe on a weekly time frame that will be best. Weekly time frame pe there is a bullish candle pattern with a big volume, maybe this kind of a volume, this much of a volume. अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, यूजुअल ट्रेंड से अबव वॉल्यूम आता है, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इट टेक्स सम सपोर्ट, सम डाइवर्जेंस ऑन द आरएसआई नियर 40, or maybe it crosses above 200 moving average. At that point of time, one can think of investing in Hindustan Unilever. Next is Reliance energy sector में तो we'll check out Reliance as well. Again, so there is a support trend line, वो break हो गया है Reliance में. That's one of the things. We can see consistently red बार्स तो देखने को मिले ही हैं, and volumes भी increase हुआ है. It's between 60 and 40. It shows consolidation. But what we can see is here is trend line का breakage है on the downward side. Golden zone जो था, if we see, I believe मैंने यहाँ से golden zone लिया होगा to the overall, yes. So golden zone जो मैंने लिया था, वहाँ से it's near that, it's actually inside that golden zone only. Another thing is, if you see, this was the previous resistance. This has been the resistance for quite some time. Let's change the color. Okay, so ये काफी टाइम तक एक resistance zone की तरह act, yeah, so काफी टाइम से resistance zone की तरह act कर रहा था. It broke out, gave good return on a short period of time for few months. Then it broke down below the resistance zone. Now it's currently trading in the golden zone, and probably it is below the resistance zone as well. Trend line का breakdown भी हुआ है. Weekly time frame पे if we see it, again 200 moving average near the golden zone. It is also itself is near the golden zone. Interestingly, green volume अच्छा खासा है support zone के पास में ही. If you see यहाँ पे consolidation है इस phase में. On the same price, we can see there is a RSI का divergence, consistent RSI, then there is a shift on the upward side. What is interesting to see is this trend line, this one. So this trend line. So ये वाली trend line तो break हो ही गई है. Now this trend line, which was this one, which was acting as a support, can now act as a resistance. Resistance की तरह act कर सकती है. हो सकता है प्राइस यहाँ से बढ़े, इस जोन के पास में जाए, यहाँ से फिर ब्रेकडाउन आ जाए. थिंग्स लाइक दैट कैन हैपन. यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम आया है अच्छा, बट इट इज नॉट as big as it is not greater than the other greener volumes which we can clearly see here. इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है वो, बट इट इज नियर 200 मूविंग एवरेज. मे बी इस वजह से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा हो. सो अभी यहाँ पे इफ we want to take an example, this. So as मैंने पहले कहा था कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर मुझे रिवर्सल देखने को मिलता है, बुलिश रिवर्सल, वो कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है. सो अगेन गोल्डन जोन से वी कैन सी इट कैन रिट्रेस अप टू दिस जोन. इस जोन तक इट कैन रिट्रेस, और इंटरेस्टिंगली अगेन वंस अगेन this zone lies in that region only जहाँ पे एक resistance हमें we were expecting already. So वहाँ तक retracement करके it can again show pullback on the downward side and can either consolidate maybe for some time or show some downward progression. So at this point of time, we already have, let us say, HDFC, which you can think of buying, TCS, which we can think of buying.
रिलायंस के लिए मे बी अगेन जस्ट लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, यू कैन कीप इट ऑन होल्ड कि रिलायंस में अभी इन्वेस्टमेंट ना करके यू कैन डू इट एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑटोमोबाइल्स में चेक मारुति सुजुकी। सो यहाँ पे अगेन सो इंटरेस्टिंगली 2026 सपोर्ट जोन मारुति सुजुकी में फॉलो हो रहा है, वहीं से एक अगेन इट्स नाइस upward movement on the monthly time frame in Maruti Suzuki, so that's a good sign. RSI again between 60 and 40, it's trying to break above 60 60 का जो एक 60 का लेवल है, that if it is below 60 can that 60 can act as a resistance, if RSI is above 60 that 60 can act as a support, so both of the things can happen. So abhi it's a bullish candle formation. Volume is starting to get above the previous a month's volume, so that's also a good sign. सपोर्ट जोन के पास से ही बाउंस बैक कर रहा है जस्ट लाइक दिस, इफ यू सी हियर। अभी अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही वॉल्यूम आना चाहिए, बट लेट अस सी अभी ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद यहाँ पर भी एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था एंड वॉल्यूम वाज गुड इनफ। यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर भी हमें ऐसा ही देखने को मिले, बट it's something good, it's not bad as compared to Reliance या HUL में what we were seeing। मारुति में it's comparatively much better कि यहाँ पे एक bullish movement देखने को मिल रहा है। So again if you just check the Fibonacci zone already I had marked, उसी जोन के हल्का सा नीचे आके डबल बॉटम बना के ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके it's starting to move up, so that's a good sign। maybe if we just see यहाँ से यहाँ, so ये जो एक जोन है छोटा सा, मे बी यहाँ पर आके जैसे अभी अटक रहा है प्राइस, so this zone can maybe sort of act as a resistance zone। यहाँ पे थोड़ा के रेजिस्ट करे, हॉल्ट करे। RSI 60 का भी एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, जोन का रेजिस्टेंस मिल सकता है रिट्रेसमेंट के कारण। So again consolidate करके then it can maybe break out, show some downward movement, take again another support, another opportunity, maybe lower price पे। अभी भी it's a good opportunity but again it's in the resistance zone, so we can wait for some time। या तो इसे break कर देगा, break करने के बाद if it comes down again this resistance zone will act as a support zone। उस समय you can buy the stock or it can move down। यहाँ पर आने के बाद again it can show good volume, good candle, so वहां पर भी we can buy the stock on a weekly time frame। daily mates above 60, so that's also good sign, it shows के it is in a momentum, it is trying to be in a momentum, but यहाँ पे 200 moving average का एक resistance है which is coinciding with the red zone, the resistance zone जो हमने weekly time frame पे mark किया था Fibonacci retracement से। so again कैन बी स्लाइटली कॉशियस, एक डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद एक अच्छे प्राइस पे आपको मिल सकता है मारुति सुजुकी टू बाय, देन यू कैन डू दैट इन्वेस्टमेंट। फार्मास्यूटिकल में वी हैव लेट अस से सन फार्मा, सो सन फार्मा विल एनालाइज। सो एज कंपेयर टू जितने भी अभी हमने स्टॉक्स देखे हैं, इफ यू सी लाइक रियली सी, सन फार्मा का RSI is already above 60, so it's in a great momentum, it is already trading।
इन अ गुड मोमेंटम, मार्केट की वोलेटिलिटी डाउनवर्ड मूवमेंट जैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, इट्स स्टिल स्टेबल। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। मार्केट में एक अनस्टेबिलिटी रहती है, देर आर कंसर्न्स इन द मार्केट। Pharmaceutical industry and IT industry are the contra industries. They usually trade in a reverse direction. They are much safer bets, as also FMCG as well. But the FMCGs, if we compare, Sun Pharma in the pharmaceutical industry is comparatively much better. So again, if we see that Fibonacci zone are already marked, सो वहां तक अभी रिट्रेसमेंट भी नहीं करा, उसका मोमेंटम इतना अच्छा है, इट्स इन अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के वो उतना डाउनवर्ड मूवमेंट करा भी नहीं उसने अभी इस जोन में। सी अगेन दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। सो फिबोनाची एक्चुअली में व्हाट आई हैव सीन इज 90 to 95% it works. The zones which are marked, they definitely act as reversal points. So यहाँ पर भी there was a rejection seen on a weekly time frame. वहाँ से अभी consolidation zone में it's between 60 and 40. So you can wait, maybe यहाँ से downward movement मिले, further rejection लेके, then we can, it's a good opportunity to buy Sun Pharma at 1600 to 1650, 1670. अबव दैट तो वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेजेस आई थिंक वीकली का इट्स फार फार वे फार। डेली में भी इट इज शोइंग गुड मोमेंटम, सो इट्स बिटवीन 60 and 40, बट अगेन मंथली इट्स गुड। वीकली में कंसोलिडेशन है, वीकली में ब्रेकआउट होते ही डेली में भी हमें मूवमेंट देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छा। वन ऑफ द things we can mark here is this zone probably, so we'll mark it like this. So that is a resistance zone. इसको ब्रेक करने के बाद it could be a good opportunity to invest. अगर downward movement आता है तो this 1600 to 1660 it's a good buying zone for Sun Pharma. Then go to infra में we have, let us say, L&T infrastructure. We'll check L&T. L&T में it's again RSI is above 60, so it's in a momentum. ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से भी बहुत दूर है जोन से। वीकली में if you see it's in a consolidation zone, so we can mark that consolidation zone as well actually. So it is trading in between this zone, so we'll mark yellow. So it's in a consolidation zone. So on a weekly time frame what we can see here is, यहाँ से if we see, so there is a support zone here. It's roughly a support zone here. एंड दिस यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अगेन माय सजेशन वुड बी एक अच्छी कैंडल बने ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम विद अ बुलिश कैंडल विद अ गुड वॉल्यूम अबव द वॉल्यूम्स जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इनसे एक अच्छा वॉल्यूम हमें मिले, देन वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस। और इट रिट्रेसेस डाउन इस जोन के पास में के, इट्स अ गुड सपोर्ट जोन हियर। दिस प्राइस ऑफ मे बी 3000 3300 to 3200, it's a good
zone, a good support zone to buy LNT. Again, on daily time frame also it's consolidation zone में, तो overall it's in a consolidation zone. डाउनवर्ड मूवमेंट आने पे जोन के जो लोअर पार्ट है वहां पे देयर इज अ बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, वॉल्यूम आता है, वन कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एलएनटी. देन वी हैव टेलीकम्युनिकेशंस में वी हैव भारती एयरटेल. So Bharti Airtel again, it's in a good momentum. RSI is above 60 on monthly. Weekly में it's sideways because वो एक resistance trend line को follow करता हुआ चल रहा है. It's taking resistance from this trend line. If we check out the Fibonacci zone, here was a Fibonacci zone. वहीं से it took support and retraced the prices on the upward side, यहीं से support लेके. But again resistance zone का there is a resistance, so वहाँ से it's taking some hold, some there is a force there जो उसे pull back कर रहा है on the downward side. टू हंड्रेड मूविंग एवरेज अगेन इट्स वेरी फार. सो दोनों ही केसेस में जो लास्ट स्टॉक हमने देखा और ये स्टॉक दिख रहे हैं, दोनों में ही दे आर बोथ इन गुड मोमेंटम एंड मूविंग एवरेजेस से काफ़ी दूर हैं. सो दे आर क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग. मार्केट की वोलेटिलिटी डाउनवर्ड ट्रेंड से इतना इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा है. सो देर इज अ रेजिस्टेंस जोन. अगर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट आता है विद गुड वॉल्यूम, वन कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन भारती एयरटेल. और ब्रेकआउट आने के बाद देर इज अ रिट्रेसमेंट, इसी जोन पे प्राइस वापस आती है. दिस जोन इफ इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट जोन, currently it's resistance becomes support. If that happens, then at that point of time वहां पर एक अच्छा वॉल्यूम आता है, बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है, वन कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, और दिस जोन कैन एक्ट एज अ सपोर्ट जोन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. भारतीय एयरटेल के बाद मेटल्स एंड माइनिंग में भी है टाटा स्टील. सो चेक टाटा स्टील एज वेल. So Tata Steel, as you can see, last two stocks we had seen कैसे वो अच्छे मोमेंटम में थे. This is again on the same lines of Reliance and all. It's in a consolidation zone. But that's a good opportunity for investment purposes. यहाँ से if we see a retracement, so it's a long retracement. So it's in the zone. So that's a good sign. कंसर्निंग पार्ट इज ये एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन, एक जोन था विच वाज फॉलोइंग फ्रॉम 2020. उसके नीचे देयर इज अ ब्रेकडाउन, बट द गुड थिंग इज ब्रेकडाउन में वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है. इनफैक्ट इट्स अ डिक्रीजिंग वॉल्यूम. सो दिस ब्रेकडाउन कैन एक्ट एज अ फेक ब्रेकडाउन. इट कैन टेक अ सपोर्ट हियर विच इज currently taking, and interestingly उसी जोन के लोअर पार्ट पे ही सपोर्ट लेके कैंडल ने अपवर्ड मूवमेंट किया है. So this is actually the power of Fibonacci retracement zone. Why this happens is this is not used by just retail investors. In fact, retail investors इतना use करते भी नहीं है. This is used by mutual fund houses, by FIIs, by DIIs, the big players. They usually trade by using simplest of technical indicators and Fibonacci retracement tool, and this golden zone is one of the top indicator which they use to identify zones where they can invest. This is one of the prime example. Invest करने के लिए it's in the zone, volumes are not that much, so it's a good thing कि breakdown हुआ है इस trend line का, but it's not to be worried about. It's just a market का reaction. Again here it's taking support
on the 200 moving average. On weekly time frame, it's below 40, ज़्यादा टाइम तक below 40 नहीं रहता है. These are fundamentally good stocks. They won't stay below 40 for a longer period of time until unless ऐसा कुछ event हो, COVID का crash and all that. Usually, again, Tata Steel is also sectoral, stock. So ये एक सेक्टर में रोटेशन करते हैं, उसी में काम करते हैं. But still, it's a Tata stock, so it's fundamentally good to buy. So it's in a good zone to buy. Tata Steel is in a good zone, 121 to 133. It's currently at 130.37. On a daily time frame, it's in a consolidation zone. Only thing to think about is this. There's a resistance trend line which is being formed here. Apart from that, it's a good opportunity to invest in Tata Steel. So next, what we have is chemical sector में we have Pidilite. So we'll check Pidilite Industries as well. So यहाँ पर भी we'll draw Fibonacci zone. As you can see, वहीं पर ही it's so beautiful to see. Lower part में ही जाके सेम जोन पे ही एक सपोर्ट लेके bounces back. That's so satisfying to see actually. So it's between 60 and 40, way above 200 moving average. Golden zone में है, so it's a good opportunity to invest. Again, see, so beautiful. This candle formation weekly time frame पे, see the volume. It's such a good volume as compared to the previous red volumes. और ये volume तब आ रहा है जब market एक downward movement में. उस समय ऐसे इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे स्टॉक्स को पिक करना और इन्वेस्टमेंट्स करना जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, दे आर इन द रिट्रेसमेंट जोन्स. दैट शोज कि व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स रिकवरिंग, these will be one of the first few stocks which will start moving at a really good pace, really faster pace, and they are fundamentally already best in their sectors, and technically ये भी बहुत ही अच्छे प्राइस लेवल पे हमें मिल रहे हैं. See, such a big volume. आज ही volume आया है. Such a big volume. So yeah, again, Pidilite Industries from chemical sector. It's in a good zone to buy. One can still invest 2700 to 2800 in between. It's trading at 2900, but still it's a good opportunity to buy. So yeah, based on ChatGPT, we have identified few of the best stocks in each of these 10 different sectors. So you can use ChatGPT to do multiple uh, identification of stocks. Maybe we can give a prompt to identify stocks which are good dividend yield stocks. So those number of stocks can also be identified. Maybe we can give a detailed prompt to ChatGPT in terms of year-on-year growth has to be greater than 15%. The price has to be less than maybe 500. The debt to equity ratio should be less than 1. So n number of uh, fundamental ratios can be specified to pick out growth seeking stocks, to pick out dividend yield stocks, maybe blue chip stocks like we have identified, penny stocks, etc. So that's it for today. I hope you all enjoyed, had a fruitful discussion, and आगे मिलेंगे और we'll continue to have such discussions. We'll use ChatGPT more and more to identify more stocks, do technical analysis. Very simple, simplistic, and it's a good opportunity to invest. Currently, buy fundamentally good stocks
continue your SIPs, etc. So thank you everyone.